Okay, so we have reached the final video of the year and मैंने बहुत सोचा है कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए. But you know what? Let's just go. So my whole journey of introspection and reflection started in 2021. I think वो इसलिए start हुआ था क्योंकि हम सब ना एक point पे आकर वो एक existential crisis में आ जाते हैं जब ज़्यादा problems आती हैं, जब ज़्यादा एकदम से things get tough and heavy and you're like कि what is the point of it all? इतने problems के through जा के भी in the end I'm just gonna die and ये सारी चीज़ें यहीं पे रह जाएंगी. So why am I made to go through it? What is the purpose behind it? What is the meaning of life? As I said, being stuck in patterns and जब वो pattern overwhelming हो जाता है और you know it gets too much to handle, that is when तुम ये questions की तरफ जाते हो. Normal days में happy moments में happy vibes में nobody cares about meaning of life. Nobody cares about oh what does it mean to be happy? Oh what does it mean to be sad? But then when you actually get hit a few times, that is when you start asking these questions. And I didn't find any answers, I'll be honest. But when you flip the question and you ask yourself, how can I add meaning to my life? That is when things change. You know, this is when I was in my peak nihilistic state कि nothing matters. किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है. किसी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है because in the end we're all dying. And how does it matter if I have enough money or not in this life? How does it matter if I'm successful or not in this life? How does it matter if I'm an absolute mess or a very sorted person in this life? How does any of it matter? Neither my body matters, neither my relationships matter, neither how hard am I working on myself matters, neither my legacy that I will probably leave behind. मुझे वो भी नहीं पता ना लोग उसका क्या करेंगे. मुझे ये भी नहीं पता कि लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में once I'm gone. और वो तो छोड़ो, like after one generation nobody is even going to remember my name. And so what is the meaning? And that is when I think I realized कि okay अगर ये सारी चीज़ें जा रही हैं, I think it's not about how much I'm taking with me या मैं इससे क्या ले सकती हूँ. It's about what I am doing with it, how much I'm giving to it. How much can I, as Simi, add meaning to my own life? वहाँ से मुझे realize हुआ है कि okay, meaning is not something big. Meaning is in small things. Meaning is coming from me, which I bring out with my own actions, with my own words, and the way I am. Say for example, मैंने आज से decide कर लिया कि मेरे लिए relationships mean something. My work means something to me. My relationship means something to me. Going to the gym means something to me. Intimacy means something to me. Taking care of myself means something to me. Being spiritual means something to me. Being a believer in God means something to me. जब तक तुम वो मीनिंग नहीं डालोगे इन एवरी लिटिल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, यू कांट शो अप एज हु यू आर. जो भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे तुमने जो मीनिंग अटैच कर दिया उसी हिसाब से तुम एक्ट करोगे, उसी हिसाब से तुम रिप्रेजेंट करोगे अपने आप को. एंड द मीनिंग विल कम फ्रॉम व्हाट योर वैल्यूज आर. तो द मीनिंग विल कंपेल यू टू लुक इनसाइड. हर चीज, एवरीथिंग दैट आई हैव स्पोकन अबाउट, everything is compelling you to ask yourself who are you as a person to get your own answers. So अगर तुमको मीनिंग डालना है किसी भी एस्पेक्ट पे, से फ्रेंडशिप मीन्स समथिंग टू मी. फॉर मी फ्रेंडशिप मीन्स इट इज नॉट फैमिली, इट इज फ्रेंडशिप. दैट इज द ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप फॉर मी. दिस इज एन एग्जाम्पल. ओके, एंड जब मैं बोल रही हूँ कि मैंने फ्रेंडशिप पे मीनिंग अटैच किया, उसका मतलब है आई नो दैट आई विल गिव माई टाइम, माई एनर्जी, माई स्पेस टू दिस फ्रेंडशिप. आई विल डू द वर्क फॉर दिस फ्रेंडशिप टू बी मीनिंगफुल, जैसा मैं उसको रिप्रेजेंट करती हूँ. और जब तुम वो रिप्रेजेंट करने लगते हो तब तुम्हारी पर्सनालिटी दिख के आती है. तब पता चलता है कि हु आर यू एज अ पर्सन. मैं कोई भी चीज पे मीनिंग इसलिए नहीं अटैच कर रही हूँ सो दैट लोग मुझे अच्छा बोले या लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें या मुझे कुछ अच्छा फीडबैक मिले. इट्स नॉट फॉर एनीवन, इट इज फॉर मी टू फील गुड. जब अंदर से हर चीज के लिए मीनिंग आ रहा है तो दैट इज चेंजिंग यू एंड शेपिंग यू एज हु यू आर. अगेन, हाई वैल्यू बोलो उसको या पर्सन विद कैरेक्टर बोलो उसको, या जो भी बोलो, वैसे तो कुछ नहीं है. अदरवाइज जब तक तुम मीनिंग नहीं डालोगे तो कुछ नहीं है. शादी करने में कुछ नहीं है. किसको शादी करनी है, क्यों शादी करनी है? इफ यू थिंक मैरिज हैज मीनिंग टू यू, इफ यू थिंक टू पीपल कमिंग टुगेदर
is a difficult thing, but it will pull you towards higher fulfillment, it will challenge you and you're ready for it, then that has meaning for you, you take that road. फिर then a lot of people say that बच्चे क्यों करने हैं, क्यों करना है, क्या नहीं करना है. Again, that is, nothing is wrong or right. It is your meaning that you've put to certain things and you have to live with it. You have to be happy doing it. So if no kids, amazing. That is your meaning. So you're moving towards that. If you think that you want to be a mother and you want a new role in your life, or you want to be a father and you want to have that role in your life, you're ready for it and you're ready with all the responsibilities and everything that comes with it, great. That is your meaning in your life. And now you've added a new role. And so वो role का एक meaning है, to show up as this selfless person for your family. I think whatever meaning that we put to things, whatever meaning that we put to life, it keeps changing. मुझे नहीं लगता है कि वो static रहेगा. मुझे नहीं लगता है जो मुझे आज लग रहा है कि ये meaning of life होगा, वो सेम चीज़ में 10 साल बाद या 15 साल बाद या 20 साल बाद भी मुझे सेम लगेगा. मुझे आई एम श्योर कि इसमें भी मुझे बहुत सारी नई चीज़ें दिखाई देंगी, इसमें भी मुझे बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे, इसमें भी मुझे बहुत एडिशंस दिखाई देंगे. मुझे शायद, या फिर ये पूरा कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड लगेगा. आई डोंट नो, लाइक यू कैन ऑलवेज लुक बैक एंड बी लाइक रॉन्ग. बट आई एम ओपन टू चेंज, आई एम ओपन टू लर्निंग. पर मेरे पास्ट से कंपेरेटिवली ये वाला जो मीनिंग मैंने अब डाला है लाइफ में, मीनिंग टू माई वर्ड्स, इफ़ आई वैल्यू माई वर्ड्स, तो मैं कम बोलती हूँ. मैं जितना बोलती हूँ मुझे लगता है कि मुझे अपने वर्ड्स वेस्ट नहीं करने, मुझे अपने वर्ड्स सही जगह यूज़ करने. आई वैल्यू माई टाइम, सो आई हैव मीनिंग फॉर माई टाइम, इसलिए मैं अपने टाइम को अच्छे से यूज़ करती हूँ, चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ जो मुझे लगता है कि मीनिंगफुल है. अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद है करना, तो आई स्ट्रेट अप से नो, बिकॉज टाइम इज़ वैल्यूबल, प्लस दैट थिंग इज़ नॉट मीनिंगफुल फॉर मी. सिंपल एज दैट. आई शो अप एज हु आई एम. मुझे कोई डर नहीं है. देर इज़ टू मच ऑथेंटिसिटी, देर इज़ रियलनेस, देर इज़ एक्सेप्टेंस एंड देर इज़ डिटैचमेंट फ्रॉम हाउ पीपल परसीव मी. मैं किसी के लिए नहीं कर रही हूँ ना, मेरे लिए इस चीज़ में वैल्यू है, मेरे लिए इस चीज़ में मीनिंग है, तो आई एम डूइंग इट. मैं खुल के कर रही हूँ, मैं खुशी से कर रही हूँ, एंड आई एम हैप्पी डूइंग इट. दैट्स इट. एंड आई थिंक आज की जनरेशन में ना ये सब क्वेश्चंस ऑल द मोर वैलिड है, बिकॉज हर चीज इज टेकिंग अस अवे. एवरी लिटिल डिस्ट्रैक्शन इज टेकिंग अस अवे फ्रॉम allowing us to add meaning into life. Every little distraction. Say for example, relationship किसको चाहिए? Casuals है ना. Write किसको करना है? Chat GPT है ना. Family किसको चाहिए? We can just live in together and then leave whenever we want to. Every little thing is taking us away from adding meaning to life. And वो जो meaning जब तुम डालते हो ना, you are subjecting yourself to a road which is full of uncertainty, risk, responsibility. The meaning will come from your values, who you are right that moment in your life. So if you're a 16-year-old, whatever meaning life holds for you, at that point will be the meaning, and that is how you will show up in life. And that is the kind of meaning you will add to different aspects of your life, to your relationships, to your work, to your friendships, to all of it. Then when you grow older, वो स्टेज पे जहाँ तुम होगे, वहाँ जैसा तुम्हें फील हो रहा है, उस हिसाब से तुम वैल्यू ऐड करने लग जाओगे. तो when people say things like people don't change, people don't do this, I feel like they have not changed. Because life literally is constantly changing. People are constantly evolving and growing. But when I find people who say that people don't change, that means that you have not worked on yourself. For you to realize that how much people can change, the amount of change a person can get in themselves. Only then will you not know कि people can change. Another thing, ये सब चीज़ें कोई बहुत, you don't have to be very ज्ञानी to know it. You just need to understand this one simple thing, that all your answers are within you. That's it. धीरे धीरे सब आंसर्स खुल जाएंगे. तुम जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछोगे अपने आप को, सारे आंसर्स तुम्हें अपने अंदर ही मिलेंगे. सारे आंसर्स will be presented to you, and it's so beautiful. Once you submit to the process, you ask your question and you submit. I'm ready to get my answers. You will find your answers. And I'm not the only person who has experienced it. Everybody who goes through it experiences it, and they find their own meaning. They add their own meaning to life, and they do their own things. But bottom line is, your answers are within you. So it's not like कि ये ऐसे बातें कर रही है तो इसको तो कुछ बहुत पता है. मुझे नहीं पता है कुछ. मुझे सिर्फ उतना पता है कि मेरे आंसर्स मेरे अंदर है. मैं जो भी फेस कर रही हूँ, मेरे को जो भी मीनिंग डालना है या मेरे को जो भी करना है,
Everything is within me, and that is it. I'm glad that I have my power in my own hands and it's not outside anymore. That's it. The entire video journal series is about taking the power back in your own hands. Who cares answer kab aaye, kab nahi aaye? But if you allow others to run or dictate life for you, it's not going to be as fulfilling. I think एक चीज़ और है कि जब तुम ऐसे मीनिंग ऐड करते हो ना, तुम प्रिपेयर्ड भी हो जाते हो कुछ और चीज़ों के लिए. वो एक ऐसा होता है कि मीनिंग सिर्फ एक चीज़ पे नहीं रहता है. मीनिंग बहुत सारी चीज़ों में आएगा. मीनिंग ऑन हाउ आई ड्रेस, मीनिंग द वे आई टॉक, मीनिंग इन द वे आई प्रेजेंट माई सेल्फ, मीनिंग इन द वे I take my roles seriously as a daughter, as whatever work I'm doing, as a sister, as a friend, whatever. And the same way, when you start taking things, in a meaningful manner, then you will be prepared for whatever new role that you are choosing in your life. And you will be prepared in advance. Not just when it happens, ये expectation है मुझसे, वो है, ये करना है, वो करना है, whatever it is. Either पहले से एक informed decision लो कि this is how my life is going to change because it will change, या फिर once you know that this is how it will change and you're not okay with it, this is not what gives you meaning, then you don't do it. फिर you start enjoying the small moments because you are adding meaning, right? तो तुमने ऐड कर दिया, तुम्हें खुशी मिल गई, that's it. किसको फर्क पड़ रहा है आगे क्या हो रहा है? That's strength and that is power in itself. I think if you recognize what I'm trying to say, if you understand truly what I'm trying to say, that you have the power to add meaning to your life, every aspect of it, you don't know the amount of power you have to literally change your life and transform your life and reflect it on people around you. So the point is कि मुझे नहीं पता वो बड़े आंसर्स किसके पास हैं, है नहीं है, हमारी एज ह्यूमन बींग्स इतनी औकात भी है वो उतने बड़े क्वेश्चंस पूछने की या नहीं है, मुझे नहीं पता. ऑफ कोर्स वी आर क्यूरियस, तो क्वेश्चंस आएंगे, ट्राई तो सब कर रहे हैं, हम सब ट्राई कर रहे हैं टू फाइंड दैट मीनिंग ऑफ लाइफ एंड पर्पस ऑफ लाइफ एंड ऑल ऑफ दैट. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हैव इट. आई डोंट हैव दैट एग्जैक्ट आंसर, बट वॉट आई फाउंड वॉज कि वॉट इफ, बिकॉज मेरे पास वो आंसर नहीं है, वॉट इफ आई चेंज माई question, how can I add meaning to my life? How can I give into my life to make it happy, to make it the most enjoyable experience, to make it the most happy experience of me as a human being, जितना मैं ट्राई कर सकती हूँ, जितना मेरे हाथ में, ठीक है? How can I make it fulfilling कि जब मैं अपने डेथ बेड पे हूँ, I look back and I be like, मेरे पास ये एक अपॉर्चुनिटी थी, I seized it, no regrets. So can't believe this is the end of my video journal series. If you've been here since the beginning, thank you so much. I'm not going anywhere. I've really started enjoying what I'm doing. I'm really loving what I'm doing. So next year, I'm going to do slightly more of it. I'm glad that maybe somewhere, some person, even one, is having a good night's sleep just listening to it. Maybe not even acting on it, it's fine. Just listening to it, that's enough. So, how would you like to add meaning to your life?